Hi everyone, how are you doing? So today we have Harshit at goclasses platform, and Harshit is our complete course enroll student. Harshit has secured All India rank 168 in GATE Computer Science and All India rank 96 in GATE DA. So he is prime example of getting top rank in both of the examination, which is CSE and DA. So welcome Harshit to goclasses, and thank you for joining. Thank you, sir. Thank you so much. So, Harshit, this session will be basically more about like how we can manage both the preparations, if that is possible. Because this year, like what I observed, that there are like only few people. Like I think only I know Apurv, I know you. I know I think not more than five people who has secured top 200 or top ranks in Gate D and CC both. So is it like this session will be more about like how to balance both? Is it really possible to balance both, or to also talk about CSE specifically and DA specifically? So yeah, so let's get started. So Harshit, let's just start with your introduction. Like, can you please introduce yourself? Whether this attempt, this year attempt was with job or with drop, or this was your first? I mean, this was the attempt with the fourth year, like that. Can you please introduce your BTech branch also? Please tell. Yes. My name is Harshit. I am currently a fourth year student in VIT Bhopal University. It's in Madhya Pradesh. And for my first attempt was in third year. And that time also I prepared with Go classes only. And I secured an All India rank of 353. And based on that, I was able to get a scholarship that you guys provide for within 500 rank. And I again joined the complete course, and I was able to secure a rank of 168 and 96 this time. Yeah, so I'm in final year. This was my second attempt with final year. Okay, so you cracked it with fourth year, with final year, and Yes, sir. you what was your BTech stream? Computer science and engineering only. Okay, so with CSE you cracked DA also and CSE also, and that too in final year. Yes. So actually, there are many questions to ask to you, because how to manage gate preparation with final year. This itself is a big, I can say, the big question, or big basically the concern for most of the aspirants who are in fourth year, like how to manage the preparation with our college semester, and how to manage both of the preparation gate, CS and DA. So there are many questions to ask from you. I think this is going to be very insightful interview, I can say. So Yes, let's sir. get started. Yeah. So how you came to know about gate, or what what was the day when you decided that, okay, I'm going to prepare for gate? Sir, GATE was not the primary aim. When in September, the IAC released that this year is going to be the first year they introduced the data science paper. So I just thought ki maybe I should give it a try. I was already studying data science, uh, but I was not like the theory thing. I used to code. I thought ki it will improve my skills for further placement. That was the main motive. But then I gave, and as I told you, in third year only I secured 353 rank, and I messaged you or Deepak sir ki what to do further. So you guys only told me ki you should maybe prepare for with final year. Right. I still have text on telegrams and that I texted you after that. Right. Yes. So I got to know about gate exam. I knew about gate exam, but I decided to give it when the data science paper was introduced. Hmm. Okay, got it. So, so how did you decide, like you will be going for CSE or D or both? Like, what was the factor, and how you was any of this, like CSE or DA, was any of this was your first primary examination, or you balance both of the examination as a primary examination? Sir, I balanced both my paper as my primary Okay. because when I gave in third year and I got that rank, I got to know that the this in DA exam, this opportunity as it is a new paper, it's not enough. I mean, Right.
the vacancies in college, the seats in college are comparatively less to computer science, and that was the reason. And also there is a very big overlap in both the Hmm. subjects. So if you are preparing and if you have time, so you can prepare for both the examinations. That was the thought process, and that's why I started preparation of computer science in maybe in April or May of 2024. Yeah. When in my college they were teaching operating systems, and that's the subject I started with. And that was not overlap of data science and computer science, but Okay. uh, purely on computer science. Yeah. So you were preparing for both of the examination. Yes. Okay. At any point in time, have you not thought of giving up on one of the examination and continue just another one? Yeah. I in the October or November, um, most of my syllabus was covered of DA, and I basically the plan was to now revise DA, but my computer science syllabus was too much left at that point, so I just put the notebooks down of DA subjects and just purely focused on computer science subjects for the 1 or 2 months. Yeah. Okay, okay. Nice, nice, nice. So, you prepared both of these subjects or both of these examinations from Go classes, or like you have only taken CSE or DA from Go classes? I completely prepared for from both classes. I don't even know other coachings, if I'm Okay. being honest. Okay. After GATE, I got to know, okay, these are the coaching that, but I only knew Go classes, and uh, yeah, Okay. so I prepared with them, with you guys only. Got it. So, you have taken combo course like Gate CSE course and Gate DA both. Yes, sir. Great. Okay. Okay. So, what was the subject sequence like? From which subject you started? Like, have you started from mathematics or which, what was the subject? The first subject I can say. So when I was preparing in third year, I started with the linear algebra part as everyone else starts with. I completed the linear algebra. That time you didn't go in depth in linear algebra and probability because the CS part was also remaining. So I completed the linear algebra CS part and the probability CS part, the calculus CS part. And after that, I think three teachers. One of them I remember there was Vishal sir was teaching machine learning. Yes. So they were at that time. Those lectures were also very good. I completely followed their lectures and made notes. That time I was not preparing for CS. So it was just Okay. BA. And also I had my third year is very hectic. My college courses I used to have 6 classes in a day, and Hmm. Oh, I couldn't complete whole syllabus also, no, the DSA part, but I did complete the ML part and the maths portion that was in both the subjects. But in when I got the result, then I started with computer science, and in computer science I started with operating system because my classes were also going on of operating systems. oh, okay. Yeah. So Got basically, I started with maths only. Got it. Okay. So you started with linear algebra, and then you have already studied machine learning from Go classes only in Gate 2000 for Gate 2024, which was taken by Vishal sir. So Yes, okay, sir. now actually I have taken machine learning. And have you attended the my lectures also of machine Yeah, I learning? have also attended your attended your lectures because the when I there because you first taught the linear algebra module 2 that was like in depth. So I Right. was forgetting the concept that was taught, and so I revised. I watched all your SVM. The lectures that were in depth, I watched them, but the basic Got it. concept that I knew, like linear algebra, so that Linear linear regression. regression. I skipped those lectures. That was like I was confident in those topics, so I left them. But I watched your SVM lectures. I watched logistic regression. I used the lectures I was watched on back propagation and neural network, etc. Got it. Okay. Okay.
So how you were doing your subject sequence? I mean, do you remember vaguely like all the subjects? What was the subject sequence? Because you have prepared for both, so it will be interesting. So can you tell me all the subjects like vaguely if you remember? Yeah. Okay. So I started with operating system in computer science, and after that I took I my plan was to take a easy subject. Harshit, hello. Actually, your connection seems to be lost. Just a second. So, hi everyone. Harshit is actually joining in just 2 minutes. Just give us a moment. Uh, the connection got lost. So he just messaged that he will be joining in 2 minutes. Yeah, no problem. Okay. So basically, Harshit has prepared with Go classes, and he has secured top rank in both the both the gate papers, Gate D and Gate CSE. So definitely, there's a lot to learn from him. Especially, I would like to know a few of the questions, like for example, what is the subject sequence, and how did he manage both of these? And there are many other questions that I like to answer from him. So I think he has just joined. Yeah. So Sorry, sir, my no network was, problem. I don't know. Yeah. No problem, Harshit. Yeah, now it is fine. So yes, Yeah. you were telling the subject sequence. So Harshit, just please tell me the subject sequence from the from the like starting, and if there is a mix up of CSE and DA, then you can tell that also. Like I mean, after operating system, have you done linear algebra or like that? So you can tell the very first subject and then in that sequence. Sir, actually, I used to pair up the easy subjects with difficult subjects. For example, I felt that linear algebra was comparatively easy, so I took a after operating system. Before that, I covered linear algebra, computer science part, and operating system I covered. After that, my semester exams were over, and I was basically free. So I could give time to everything. So first, I used to take a subject. For example, I took after operating system, I covered computer networks part. So with maths, I used to pair up a difficult subject. After that, okay, so after operating system, I took computer networks, and then Okay. in evening I used to study for the maths, the module two, basically. And after that, I took the easy subject with difficult. For example, I felt DLD was comparatively easy and machine learning was difficult. So I studied DLD with machine learning. And AI Got lectures also I paired with a difficult subject only. When I was studying organization, I used to watch the lectures of AI. That's how I covered. And after that, the last portion, that DSA portion, I covered it in November, December. That was only remaining. Okay, okay, great, got it. So, like, you basically manage both of this, and along with that, you have also managed your college. What my college does is it complete all the subjects that I used to attend the classes of in third year. So in by June 2024, I was done with the subjects that used to take up a lot of time. The final year it was just for placements and the major project of final year. So as I was not sitting in placement, I decided not to sit in placement. Okay, All I could focus on gate like 24/7. got it. Okay, okay. So basically, like, you were comparatively free to prepare for both of these subjects, both of these Yes, courses, sir. both of the examination. Okay, got it.
So that's really inspiring that you are basically managing both, like along with operating system, you are also managing some mathematics subject, and you have done OS and CN first, like because these are the tough subjects for from the computer science point of view. Okay, Yes, sir. okay, great. So have you prepared your notes, or like you have basically just relied on our annotated notes? Sir, of maths, I have like proper notes of two copies of like 200 or 300 pages. The maths portion that was not available in uh, I mean, the written notes were not there, only the annotated ones were there. So I made Wow. the notes. I also told you during felicitation that I Yes, yes, brought yes, I even remember. brought the news because my AI exam of IST was near, so I brought them for revision. I still have those notes with me. Uh, but the subjects that whose notes were already available, for example, computer networks, notes were available, DSA notes were available. So that I skipped. I made operating systems notes I have, but other than that, I thought that it would take too much time and the content was almost the same. I mean, करण भैया के नोट्स थे ना हाँ वो हाँ जो हाँ हाँ। डिटेल हाँ करण तो वाज उन्होंने आवर गेट टॉपर, हाँ गेट सीएससी टॉपर, उनकी या 101 रैंक आई थी। हाँ उन्होंने पूरा मतलब डिटेल में बना ही रखे थे लेक्चर्स फॉलो हाँ, करते हुए तो मैंने राइट। उन्हीं के नोट्स फॉलो किए थे। ओके ओके। तो जिनके नोट्स अवेलेबल थे वो आपने उनके फॉलो कर लिए, जो नोट्स अवेलेबल थे, जो लाइक एनोटेटेड नोट्स के अलावा जो हम स्टूडेंट्स जो टॉपर्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपने वो फॉलो कर लिया। अदरवाइज अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने खुद ने अपने बना लिए। यस। ओके ओके। सो बेसिकली नाउ वी कैन से कि अब सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हम आपके भी नोट्स अगर अवेलेबल कराते हैं तो इन दैट केस लाइक एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। ये सर मेरे पास मेरा एक बार ये एमटेक रिसर्च मेरे पास अच्छे नोट्स हैं मैं स्कैन करके आपने वाह। मैंने बोला था मैं भेजूंगा बट फिर मेरा उसका क्या बोलते हैं ए ए एआई का टेस्ट आ गया था उसके बाद फिर हाँ, और भी राइट। काम अभी फिर मेरे दिल्ली का टेस्ट था अभी फिर ओके मैं ओके आज रात मेरी 6 बजे मतलब मेरे को रात में निकलना है 6 बजे सुबह फ्लाइट है मेरी फिर से बैंगलोर एमटेक रिसर्च का इंटरव्यू है ओके आईएससी में ओके ही। ओके ओके। ठीक, एक बार आप इंटरव्यू से फ्री हो जाएं तब डेफिनेटली आप नोट शेयर करो, क्योंकि ये बहुत हाँ सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे, और आपकी आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि मैंने इस साल मैंने बहुत ही कम स्टूडेंट्स को देखा है जो दोनों में टॉप रैंक लाए। आप जानते हैं क्या, जैसे अपूर्व हो गए, उनके अलावा आप जानते हैं किसी को? मैंने एक देखा था लिंक्डइन पे जिनकी आई थिंक दोनों में अंडर 10 थी तो दैट वाज लाइक तो ओ, वो तो वो उतना तो एक्सेप्शनल हो गया, हाँ। राइट राइट नहीं राइट। बाकी मैंने नहीं देखा था पूर्ति भी आई थिंक अंडर 200 है दोनों में या हाँ फिर हाँ ऐसी के अराउंड ही है। हाँ, राइट राइट राइट। ग्रेट। सो आपने नोट्स भी बनाए, आपने मतलब अपना प्रोजेक्ट भी मैनेज किया अपने फोर्थ ईयर का, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने साथ में की, दैट इज़ रियली नाइस। ओके। सो व्हाट अबाउट द रिवीजन, लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट रिवाइजिंग, और या फिर आपने मतलब पैरेलल में रिवीजन भी किया? आपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ा और पैरेलल में रिवीजन भी किया, ऐसा ऐसा हुआ था, कैसा हुआ सिर्फ था? मैंने ऐसा ही किया था पैरेलल में रिवीजन मेरा सिलेबस जो था वो मैं इवन एग्जाम के 2 दिन पहले तक आई कुडंट से कि मेरा पूरा कंप्लीट है कुछ ना कुछ हमेशा रह ही रहा था। हाँ। मैंने जितना मैं रिवाइज बट मैंने एक चीज सही की थी जो मैं बाकियों जितने भी एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं देखेंगे बाद में उनको भी सजेस्ट करूंगा कि यू गाइस शुड गिव द मॉक्स ऑन टाइम आई मीन डोंट लाइक वेट कि पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब बैठ के मॉक देंगे। आई वॉज हम्म। प्रिपेयरिंग with one of my friends and this is the mistake he did. He used to wait once his whole syllabus is completed, then uh, he will prepare. He will give mocks. But आपने पहला AIMT हुआ था दिसंबर के लास्ट वीक में हाँ। एंड मैंने दिया था एंड मेरे 48 मार्क्स आए थे उसमें। अच्छा, आपने मैंने पहला टेस्ट ही एएमटी दिया था, उससे पहले आपने कोई भी नहीं दिया? नहीं मैंने मौका कोई नहीं दिया था मेरा ओके, पहला कुछ टॉपिक AIMT वाइज था। सब्जेक्ट वाइज कुछ भी नहीं दिया आपने? नहीं नहीं वैसे दिए थे मैंने वैसे बिल्कुल मॉक्स फुल फुल लेंथ लेंथ वाले, मैंने हाँ। AIMT ओके दिए थे। ओके, गॉट इट। मैंने सारे लगभग कवर नहीं कर पाया था बट मैंने डेटा साइंस का तो मैंने सारे टॉपिक वाइज दिए थे बट कंप्यूटर साइंस के फिर भी टॉपिक वाइज छूट गए थे मेरे बहुत सारे। ओके ओके, नाइस। तो लाइक आपने ऑन एवरेज आप कितने आवर्स पढ़ते होंगे, और आपका क्या डेली रूटीन रहता था? अगर आपने फिक्स रूटीन रहता था क्या, पहला क्वेश्चन तो, अगर हाँ तो क्या रहता था?
सर ऐसे फिक्स नहीं रहता था, बट मेरा क्या रहता था ना कि अगर मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ, मेरा दो प्रिपरेशन मेरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जब मैं लेक्चर्स देख रहा था, एक जब मैं प्रिवीजन, जब फाइनल फेज था बेसिकली। तो जब मेरा लेक्चर्स रहता था तब मैं जब भी उठता था मैं कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स देखता था। अप्रोक्स 3-4 घंटे जितना कवर हो जाता था उसको ओके। करता था। एंड शाम को जो रहता था, अगर मैं 1-2 घंटे निकाल पा रहा हूँ, तो मैं वो डेटा साइंस, क्योंकि वो 3-4 घंटे के लेक्चर्स देखने देख कहने को 3-4 रहते, बट वो हो जाता है एक्सटेंड हाँ, फिर वो। काफी टाइम हो जाता है, हाँ। बट मैं इससे वो कह रहा हूँ कि 3-4 घंटे का मतलब कंटेंट मैं देखता था। और कंप्यूटर वाह। साइंस को, और शाम को 1-2 घंटा अगर मेरे पास रहता था, तो मैं एक अब क्योंकि मैंने डीए का लगभग 30-40% सिलेबस कवर कर लिया था, लीनियर अलजेब्रा। तो हम्म। आप जो जैसे लेक्चर्स अभी लेते थे, तो आपने जैसे अभी लिया, फिर मैं अगले दिन शाम को एक वही 1.5 घंटे के लेक्चर्स आते थे, तो मैं वही 45 मिनट्स में 2x भी लगा के देख लेता था, एंड वही उसके नोट्स बनाते बनाते 1-2 घंटा मतलब मैं डीए को भी देता था। तो ऐसे 4+2 के अकॉर्डिंग लगभग चलता था। ओके, ओके, गॉट इट। सो वैसे आपको क्या लगता है कि सीएसई और डीए में इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट ड्यूरेशन और टोटल ड्यूरेशन, मतलब जो मतलब कितना ज्यादा है? जैसे सीएसई और डीए को आप कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ द मेहनत की, किस में ज्यादा मेहनत लगती है, किस में ज्यादा टाइम लगेगा, और कितना, वो तो सबको पता है कि सीएसई में टाइम ज्यादा लगेगा, पर कितना ज्यादा? सर ज्यादा तो लगेगा टाइम, क्योंकि है, आई मीन कंटेंट अच्छा है, बट वो है मतलब देखने के लिए। हाँ। बट ऐसा भी नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, आई मीन मैंने किया और लोगों ने किया है, तो इट्स मैनेजेबल आई वुड से। राइट। है तो आई मीन आई वुड से कि डेटा साइंस का भले वॉच आवर्स कम हो, बट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल एसवीएम का कॉन्सेप्ट आपने अगर पढ़ा है एक बार, आप उस समय लेक्चर देखते समय समझ आएगा कि ओके हो गया ठीक है। या फिर केकेटी कंडीशन लगा दी, चलो ठीक है। बट अगर तुम फिर बैठोगे एक बार कि खुद से एक बार लगा के देखते हैं कि स्क्रैच से हम लोग एसवीएम की तरफ जा पा रहे हैं, डेरिवेशन कर पा रहे हैं नहीं, हम्म। तो दैट वुड बी लाइक कि तब समझ आएगा कि ओके नहीं हो रहा है अभी, तो उसमें फिर टाइम लग सकता है नहीं। बट अगेन कंप्यूटर साइंस ज्यादा वो है, कंटेंट ज्यादा है, बट डेटा साइंस इज इक्वली डिफिकल्ट आई वुड से। इट्स राइट। नॉट ओके। इजी, आई मीन 2024 का जब कर रहा था प्रिपरेशन में, तब पेपर बहुत इजी आया था, बहुत इजी आया था मैं बोलूंगा, हम्म। जो मैंने दिया था। एंड 2025 का फिर उतना ही एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था कि इतना डिफिकल्ट आएगा। बट अगेन इतना प्रिपेयर किया था बैठ के, तो फिर हुआ था, फिर वो सही से हो गया था। गॉट इट। एंड हर्षित, आप एएमटीज के बारे में बता रहे थे कि आपके एएमटी में 48 मार्क्स आए थे, 46 बताए थे आपने, 8 बताए थे? 48 मार्क्स आए 8। थे मेरे। ओके। सो इट वाज सीएसई एएमटी और डीए एएमटी? 48 वाला तो सी एस सी ए एम टी था, डीए का बाद ओके। में आया था। ए एम डीए टी में आपके आया था। पहले पहले एएमटी में कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे को ऐसे याद नहीं है, बट मैं रैंक बोलूंगा तो मेरी अंडर 60 रैंक थी डीए में। ओके, ओके, गॉट इट। सर सो मैं एक और हाँ, चीज, हाँ बताइए। डीए का जो था, जब मैं सीएस का दे रहा था, तो मैंने पहला डीए का एएमटी नहीं दिया था। मैंने शायद दूसरा या तीसरा एएमटी पहला और दूसरा मैंने ऐसे मतलब खोल के वो पेपर सबमिट कर दिया था, फिर जो क्वेश्चंस थे वो बैठ के लगाए थे मैंने, मतलब प्रॉपर बैठ के 3 घंटे नहीं दिए थे वो। बट जो क्योंकि कंप्यूटर साइंस का भी पेपर था, मैं 3 घंटे निकाल नहीं पा रहा था, मैंने ब्रेक ले लेके एएनटी का पूरा वो सॉल्व किया था। बट जब कंप्यूटर साइंस का हो गया, उसके बाद भी आपने शायद 3 4 एम एएमटी कराए हाँ। थे डीए के, तो वो मैंने बैठ के सारे दिए थे फिर। ओके, ओके, गॉट इट। सो आप सॉल्व में एएमटीज में, हाँ बताइए हर्षित। सॉल्व मैंने वो भी किए थे, डीए के एएमटी 1 और 2 भी किए, बट वो मतलब बैठ के प्रॉपर नहीं दिए थे। राइट, आपने टाइम बाउंड में नहीं दिए थे, वो अपने मतलब एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे। हाँ हाँ हाँ। गॉट इट। यस। एंड आपने सिली मिस्टेक्स भी की होंगी एएमटीज में या फिर टेस्ट सीरीज में या किसी भी टेस्ट में, तो सिली मिस्टेक से आपने कैसे कैसे ओवरकम किया? सर वो तो प्रैक्टिस आपको आई मीन सिली मिस्टेक्स तो इवन मेरे एग्जाम में हुई थी। मैं कंप्यूटर साइंस का जब मेरा सेट 2 था, हाँ। और मैं पेपर दे के आया था, एंड उसमें
लगभग आप मानेंगे नहीं, मेरे 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स के थे, एंड मैं वो गलत करके आया था। कुछ एकदम छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से लगभग कितना 6 से 8 मार्क्स को मैं यहाँ, और वो सेट 2 भी था। नॉर्मलाइज में वो 10-12 मार्क्स और जाता, तो मेरी क्या ही बताऊं। इवन पता है सर, मैं हाँ। जब एग्जाम दे के निकला था, वो एक टीओसी का क्वेश्चन था जिसमें मॉड 7 आई थिंक का क्वेश्चन था। और वो मैंने वीडियो देखी भी नहीं थी, मैं बाइक पे बैठ के वापस आ रहा था पापा के साथ, एंड मैं रास्ते में, मतलब कुछ पेन कॉपी कुछ हाथ में नहीं है, एंड मेरे दिमाग में ऐसे आया कि अरे एक एक वैल्यू रहेगी। मैंने उसमें 5 नहीं था, एंड मैंने मॉड 7 निकालना था, तो आई थॉट कि मॉड 5 कैसे ही आएगा। बट वो फिर 12 जो होता है, 12 मॉड 7 5 आता है, और वो फिर निकाल सकते थे 1 2 3 12 जो है वो 1 2 3 4 की हाँ। कॉम्बिनेशन से आ। तो मैं बाइक पे बैठ के फिर वो, आई मीन वो स्ट्रेस की वजह से ही नहीं हुआ ना, वरना अगर तुम बिना हम्म। कॉपी पेन के रास्ते में अगर कोई सॉल्व कर दे रहा है क्वेश्चन, तो ट्रू। यू कैन गेट इट। राइट। सिली एक्चुअली आप, मिस्टेक्स मेरे पे थी। हाँ, आपने मतलब इतना आपके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि आपको प्रैक्टिस का एनफ टाइम नहीं मिल पाया था कि आप सिली मिस्टेक्स को एनफ रिड्यूस कर पाए। मतलब ऑब्वियसली आपने रिड्यूस किया, आपकी टॉप रैंक आई है, बट अगर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम मिलता, एक महीने का और मिलता, तो शायद इट कुड हैव बीन फार बेटर। मतलब ऑलरेडी यू यू हैव गॉट टॉप रैंक, बट स्टिल आपकी हो सकता है कि अंडर 50 आ जाती दोनों में, अगर आपको एक महीने का और एक्स्ट्रा टाइम मिलता इससे तो प्रॉब्ली। मतलब नो वन नोज, हो बट सकता है यस। बट हाँ। Okay, okay. So, what are the, some few of the moments if you remember कि यार गेट सीएसई में या फिर गेट डीए में कि इस टॉपिक में या फिर इस सब्जेक्ट में ये कुछ गो क्लासेस से ये पढ़ा और एकदम ऐसा मजा आ गया कि यार वाह, कुछ ऐसा टॉपिक याद है क्या आपको? हाँ, मेरे को याद है, मैंने आपको बताया था फेलिसिटेशन में, आपने पढ़ाया था कंप्यूटर नेटवर्क्स में। वो क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम वगैरह के क्वेश्चंस जो थे, हाँ। वो इतने डिटेल में कराए थे कि मेरे को उस लेवल के क्वेश्चंस इवन पीवाई क्यू में नहीं मिले थे। एक आपने क्यूइंग और ट्रांसमिशन का मिक्स क्वेश्चन था वो, कि और हाँ। मैं पूरा, आई मीन जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मैं इमेजिन कर पाता था कि ओके यहाँ से ये पैकेट है, इससे ऐसे करके निकलेगा, फिर वो पूरा ट्रेवल करेगा। आई कुड इमेजिन कि ओके क्या हो रहा है, मेरे को फॉर्मूले में कभी रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें उसकी वजह से। राइट। तो वो चीज तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इवन लीनियर अलजेब्रा जब मैं पढ़ रहा था, उसमें भी पूरा तो वैसे ही पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट लेके पूरा, कहीं कहीं फॉर्मूला यूज किया ही नहीं है आपने। और ये चीज पता है फायदा मेरे को, मैं एग्जांपल देता हूँ मेरा। जब आईएससी में सीडीएस का इंटरव्यू था, ओके। वो हाँ। वो एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एक 5x1 वेक्टर दिया उन्होंने, 1 2 3 4 5 करके 5x1 वेक्टर था। और उसने उन्होंने बोला था कि ये यू है अगर, तो यू यू ट्रांसपोज की, यू यू ट्रांसपोज एक नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी 5x5 की। तो उन्होंने मेरे से रैंक पूछा था, उसका डिटर्मिनेंट पूछा था, और उसका ट्रेस पूछा था। ओके। अब नॉर्मल कोई होगा तो वो फिर मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनाएगा, पर आपने वो कॉन्सेप्ट ऐसे समझा रखा था कि ओके जो आइगन वैल्यूज रहती हैं यू यू ट्रांसपोज की और यू ट्रांसपोज यू की, वो सेम रहती हैं। तो अब हाँ। वो कॉन्सेप्ट याद था मेरे को, तो मैंने बता दिया सर को कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा, जीरो। क्योंकि हाँ। बची हुई आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगी। और रैंक पूछा था, तो रैंक तो एक ही वेक्टर है, उसी से निकल रहा है, मतलब जो भी है वो एक भी फॉर्मूले पे रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे को, ये कह रहा हूँ बेसिकली मैं। और यार ट्रेस भी वैसे ही आ गया था। वो जो, हाँ, ट्रेस यू मतलब जो डॉट प्रोडक्ट दोनों का या फिर उसकी लेंथ का स्क्वायर, तो हम्म, सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, ये यू ट्रांसपोज वाला, या फिर ए बी, मतलब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए की जो आइगन वैल्यू सेम होती हैं, हाँ हाँ। ये हर साल कम से कम 3-4 एस्पिरेंट से पूछा ही जा रहा है। मैं जितने लोगों से बात करूं, 3-4 टॉपर से पूछा ही जा रहा है। जैसे अभी इस साल तो मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन अभी आपसे इंटरव्यू रिलेटेड ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन आपने अभी बताया तो अभी पता चला कि हाँ, ये आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आर सेम बेसिकली। तो ये चीज हमने, हम्म। आई थिंक ये मुझे लेक्चर नंबर भी याद है, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, लेक्चर 10D, आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी आर सेम, कुछ ऐसा उसका लेक्चर का हेडिंग है लीनियर अलजेब्रा हम्म। में। तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट बहुत सारे आईआईटीज में, आईआईएससी में, और इनफैक्ट गेट में भी आ चुका है, टीआईएफआर में भी आ चुका है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, मतलब बेसिकली हिडन कंसेप्ट है, आई कैन से हिडन कंसेप्ट है, बट गो क्लासेस के लेक्चर से ये कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है। लाइक स्टूडेंट्स को पता चल रहा है ताकि वो आंसर कर पा रहे हैं। यस सर। राइट, गॉट इट।
ओके ओके। सो रियली नाइस टू हियर कि मतलब आपको गो क्लासेस के सारे कोर्सेज सारे कंसेप्ट आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर पा रहे हो इंटरव्यू में गेट में। ऑब्वियसली ये आपकी मेहनत है, बट हाँ वट एवर वी कुड हैव डन वी आर रियली हैप्पी फॉर दैट। Yes, sir. I am also grateful to you for थैंक यू। this. थैंक यू हर्षित। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वीकली क्विजेस। हैव यू अटेम्प्टेड अवर वीकली क्विजेस? I've attempted some of the weekly quizzes. I couldn't complete ओके ओके यस। all of them parallelly. I tried to complete as much as I could, but yeah, I didn't complete all. गॉट इट। हाँ वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता, दैट आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हाँ मतलब हो जाता है वो तो। गॉट इट। तो टेस्ट सीरीज के मैं यूजली फिर दे देता था इतने, कुछ अगर ऐसा लग रहा रहता था तो वो कवर यूजली हो जाते हैं। I mean, टेस्ट सीरीज के राइट। जो वो रहता है टॉपिक वाइज वगैरह। Got it. So overall, how was your experience with regard to the test series? Like आपको क्या लगता है कि quality of the question in the test series वो कैसे थे? You can be सर honest टेस्ट सीरीज, मतलब हाँ। नहीं मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैं मेरे को टेस्ट सीरीज बहुत, मैं बता तो रहा हूँ, आई थिंक मेरे रैंक वन ऑफ द रीजन सारे या वही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आई मीन टेस्ट सीरीज की मैं ऑनेस्ट रहूंगा तो मैंने इतनी क्वेश्चंस, मतलब मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया कि वन कैन से कि मैंने सारे किए क्वेश्चंस, ऐसे मैंने नहीं किए। पर जो मैंने किए हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते थे कि जैसे कंपाइलर डिजाइन के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने किए, वो मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि कैसे क्या होंगे हम्म। फिर रहते थे तो। और कितने क्वेश्चंस मैंने गिव अप भी किए हैं ऐसे कि ये तो क्या ही पूछेगा करके, बट फिर वो मैंने सॉल्यूशन पढ़ो तो समझ आता है ओके दिस इज लाइक पूछ सकते हैं। आई मीन अगर हाँ उनका मन किया बाद में। बट हाँ, अच्छे क्वेश्चंस रह रहे थे। आई मीन इन डेप्थ पूरा कवर चेक हो हो जाता जाता था एक था। बार कि हाँ। राइट राइट। यस सर। हाँ यही हमारा एम होता था कि कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया या फिर मतलब जो स्पेसिफिक टॉपिक के टेस्ट हैं, जैसे गेट डीए की अगर मैं बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा में मान लो कि हमने प्रोजेक्शन से रिलेटेड मान लो कोई टेस्ट है, तो वी वांट टू मेक श्योर कि प्रोजेक्शन रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। उस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर 15 क्वेश्चन है, उस टेस्ट में अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में से मतलब 15 के 15 क्वेश्चन पूरे वैरायटी के क्वेश्चन हों। कोई भी क्वेश्चन मतलब जनरली ऐसा नहीं होगा कि आपको रिपीटेशन में मिल जाएगा, मतलब सिमिलर भी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं रहते सिंगल में। Right, right. Okay, so I think we have covered most of the things. Uh, yes, yeah, whatever I had in my mind, I have covered most of those things. Any advice that you would like to give to the aspirants, to those who are going to prepare for either DA or CSE? इस मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि अगेन अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो एंड तुम्हें ये लगता है कि जस्ट गेट देना है, फॉर्मूले याद कर लेते हैं हो जाएगा, तो मैं ये बोलूंगा कि इवन आफ्टर गेट बहुत सारी भाई आई रैंक आ भी जाएगी तो है डायरेक्ट एडमिशन, ऐसा नहीं है, बट बहुत अच्छे अच्छे उसमें है कि वो जाएंगे तुम्हें अच्छे डेप्थ में क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने अभी तक वही आईआईटी दिल्ली का मैं अभी एआई का जो रिटन टेस्ट दे के आया था, कितने क्वेश्चंस मेरे Harshit, actually your network has again went down. So, Harshit will be joining in just a few minutes, just to 1 or 2 minutes. So basically, I just wanted to hear, okay, what advice that he would like to give to future aspirants. So he will be continuing on that. Uh, Basically, he has cracked both the examination, and I can say that it is really rare. This year, particularly, it was really rare that any topper has cracked both the examination. I have came across 1 or 2 toppers, and Harshit is just one of them.
So you can learn from his dedication, you can learn from his passion of studying, his dedication and his commitment. So he has covered not just gate CSE, he has also covered gate DA. So gate CSE itself has huge syllabus. Along with that, he has also covered gate DA, and he has got top rank. And see, I can add one thing here is that generally we see that, okay, like, see, generally we see on the YouTube or maybe in our college or like that, that okay, he or she has become topper. Maybe that's like, okay, normal case, like I can also study, I can also be topper. Yeah, yes, that is true, that you can study, you can also be topper. But the thing is that it takes a lot of effort. Okay, it takes really and really lot of efforts to get top rank. If you look closely, any of the topper, you will find that on average, at least in last 3 months, on average, they've studied more than 10 months. Okay, most of the toppers, I can say 95% of the toppers, they have studied more than 10 hours, more than 10 hours in the last 2 3 months, definitely. Okay, so you might think that you can be topper, but you should be ready to put that much efforts. And that is actually, that is interesting also. I mean, once you start studying, your interest will automatically be increasing towards the subjects. Okay, so Harshit has joined, so he is going to join in just few seconds. Yeah, Harshit has joined now. Yes. So, Harshit, you were telling about a message that you want to give to all the aspirants. So, you were giving the example of your IIT Delhi interview. Okay. So, I think there is some internet issue at his side. आ रही है बस Yes, Harshit. हाँ, सॉरी आप, सुबह हाँ, नो प्रॉब्लम। आप आईआईटी दिल्ली के बारे में बता रहे थे। आप आईआईटी दिल्ली का अभी जो रिटन टेस्ट थे का हाँ रिटन टेस्ट था उसमें भी जैसे अ, अगर CS एंड DA की कोई प्रिपरेशन कर रहा है मतलब साइमल्टेनियसली तो जैसे अब केवल अब उसमें कट ऑफ जो क्लियर होता है वो केवल CS का भी होता है 720 जो आता है बट उसका एग्जाम जो अगला था उसमें हाँ। लाइक 25% वेटेज ML का भी था एंड मैथ्स जो उसमें प्रेजेंट थी वो भी क्या बोलते एकदम मतलब CS लेवल की मैथ्स नहीं थी अच्छी मैथ्स थी हम्म। तो अब मैं अगर कोई दोनों की प्रिपरेशन कर रहा है तो इट्स लाइक बेनिफिशियल ओनली ये यू कैन कांट थिंक लाइक दैट कि एक एक करते हैं तो कोई ना वो बहुत अच्छा हो जाता है मतलब अगर रैंक बाय द वे कम भी आई तो यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स इट विल बेनिफिट यू ओनली एंड अगर तुम ये सोचे चलते हो कि केवल फॉर्मूला से गेट ही क्वेश्चन हो जाएंगे तो मे भी हो सकता है हो जाए पैटर्न रिकॉग्निशन का खेल रहता है एग्जाम में तो बट फिर इंटरव्यू में फिर वो नहीं हो पाता है इंटरव्यू में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिनका जिसपे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे फिर वो यही यही बता रहा था मैं राइट, राइट, ट्रू। सो दैट इज रियली ट्रू दैट अगर आपने, लेट्स सपोज समहाउ इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ, बस अंधा अंधा प्रैक्टिस करता जाऊँ, कंसेप्ट नहीं पढ़ूँ, तो हो सकता है कि गेट में 300 400 500 के अंदर रैंक आ जाए आपकी। टॉप 200 लाना फिर भी डिफिकल्ट मुझे लगता है ना, बट हाँ, हो सकता है कि आपकी 500 के अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर आपको इंटरव्यूज में दिक्कत आएगी। तो इसलिए एक बारी अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल पढ़ो, और पढ़ने में जितना कंसेप्चुअल पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा। सो बेसिकली मतलब प्रोपोर्शनल है। अगर आप उसको रट के पढ़ोगे तो बोरिंग भी लगेगा, और रटना भी पड़ रहा है तो फायदा क्या है? तो इससे अच्छा तो डेप्थ में पढ़ो, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मजा भी आएगा। Right. So thank you so much, Harshit, for joining and for sharing your experience. I'm 100% sure that this interview is going to be helpful for most of the aspirants, especially who are in dilemma whether to choose Gate CS or Gate DA.
because I generally suggest to either prepare for CS or DA. But yes, there are examples like you who can prepare for both of the examination, that too from Go classes. And in the sense that I'm why I'm saying, because we generally our lectures are little longer, and because we teach many concepts and many examples. So you Yes. can prepare for CSE and DA, that too from Go classes, and you can also make notes. Okay, you can make notes from Go classes, and you can cover all the lectures. So it is actually possible because Harshit has done it. So maybe some of you can also do it. So thank you, Harshit, for inspiring all of the future aspirants. Thank you, sir. Thank you.